Welcome everyone. This lecture will discuss all the 20 questions of exercise 5.2. Let's check the first question. Question जो है fill in the blanks की form में है and it's given that for any AP, A is first term, D is common difference, N is number of terms and AN is representing the nth term. और यहाँ पर हर केस में हमें तीन वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है और फोर्थ वेरिएबल हमें फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. हर केस में जो है विल यूज nth टर्म फॉर्मूला दैट्स Tn इज a प्लस n माइनस 1d. यहाँ पर हमें Tn जो है वो फाइंड करना है और a, n और d की वैल्यूज हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है. सो पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट Tn इज 7 प्लस 8 माइनस 1 टाइम्स ऑफ 3. So 8 minus 1 is 7 and 7 times of 3 is 21 and 7 plus 21 that's 28 and thus the nth term is 28 or this fill in the blank value will be 28. Let's check the second case. Again इस second case में तीन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें गिवन है तो इस फॉर्मूला में हमें d की वैल्यू निकालनी है. Tn जो है वो 0 गिवन है, A is given as minus 18 and N is given as 10. So putting these values we'll get this linear equation in form of D. 10 minus 1 that's 9 and negative 8 will go on the other side and will become positive 18. So 18 is 9 times of D and D is 18 by 9 or 2 and thus this fill in the blank value will be 2. Let's check the third case now. तो इस थर्ड केस में हमें a वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू निकालनी है. तो इस फॉर्मूलाज में जो हमें वैल्यूज़ गिवन है d, n और tn की, लेट्स पुट दोज वैल्यूज़ हियर एंड सॉल्विंग इट विल गेट माइनस 5 इज a प्लस दिस इज 17 टाइम्स ऑफ माइनस 3 एंड 17 टाइम्स ऑफ माइनस 3 इज माइनस 51. ये माइनस 51 दूसरी साइड जाएगा, इट विल बिकम प्लस 51 एंड 51 माइनस 5 इज योर 46. And thus this value of blank here is 46. Let's check fourth case here now. So इस fourth case में हमें यहाँ पर n की वैल्यू मिसिंग है तो हम अपने इस फॉर्मूला में a, d और tn की वैल्यूज जो है विल पुट हियर एंड नाउ विल सॉल्व इट टू गेट वैल्यू ऑफ n. तो ये माइनस 18.9 इट विल गो ऑन द लेफ्ट साइड एंड इट विल बिकम प्लस. सो 3.6 प्लस 18.9 दैट्स 22.5. ये जो 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड करेगा. ऑन डिवीजन दीज आर लाइक डेसिमल्स सो डेसिमल विल गेट कैंसल्ड. सो 225 डिवाइडेड बाय 25 दैट्स 9 एंड दिस माइनस 1 विल गो ऑन द अदर साइड सो वी आर गेटिंग n as 10. सो हियर द वैल्यू ऑफ दिस ब्लैंक इज 10. लेट्स चेक फिफ्थ केस नाउ. सो यहाँ पर ये जो लास्ट केस है इसमें tn की वैल्यू मिसिंग है and we'll use our formula जहाँ पर हम a की वैल्यू will put as 3.5, d is your 0 and n is 105. एक्चुअली अगर हम यहाँ चेक करेंगे तो d 0 है, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म के बाद जो सब्सिक्वेंट टर्म्स हैं उनमें इंक्रीमेंट 0 है. इंक्रीमेंट 0 है तो दैट मीन्स द टर्म रिमेन्स सेम. तो ये कांस्टेंट वाली AP है हमारी जहाँ पर हर टर्म की वैल्यू 3.5 है. ठीक है, एंड विल चेक द सेम. यहाँ पर फॉर्मूलाज में जब हम वैल्यूज़ डाल रहे हैं सो एनी टर्म मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. सो विल गेट Tn इज 3.5 प्लस 0 और Tn इज 3.5. तो यहाँ पर जो nth टर्म है दैट इज 3.5 एंड दैट्स आवर आंसर. लेट्स डू सेकेंड क्वेश्चन. इट्स इन MCQ फॉर्मेट एंड इट हैज़ गॉट टू पार्ट्स. लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट. हियर एन AP इज गिवन और इस पर्टिकुलर AP में हमें 30th टर्म फाइंड करनी है. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन. विल स्टार्ट विद व्हाट्स गिवन टू अस. गिवन टू अस इज एन AP एंड सॉल्यूशन विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग लेट A इज द फर्स्ट टर्म विच इज गिवन एज 10, D इज योर कॉमन डिफरेंस विच इज 7 minus 10 और minus 3 and let's assume Tn is your nth term and thus T30 is your 30th term. So we'll use our nth term formula here where we'll put n as 30, a as 10 and d as minus 3. Putting these values we get T30 as 10 plus 29 times of minus 3.
So multiplying this, we'll get T30 as 10 minus 87 or T30 as minus 77, and thus your 30th term in this AP is minus 77, and therefore option C is our correct answer. Now let's check second part of this question. The second part is similar to what we have done in the first part. Given to us is an AP, and in this AP we have to find 11th term. So we'll start by assuming A as the first term, which is given as minus 3, and your D is the common difference, and the common difference is minus half minus of minus 3, or we can say common difference is 2 minus minus half. So that common difference is coming as 2.5, and let's assume Tn is nth term, and thus T11 is our 11th term of this AP. So using nth term formula here and putting the values of n as 11, A as 3 and D as 2.5. So we'll get 11th term as this. Now this 11 minus 1 is 10, and 10 times 2.5 is 25. So 11th term is minus 3 plus 25 or 22, and thus 11th term of this series is 22, or we can say option B is the correct answer. चलिए जी थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं. यहाँ पर हमें 5 डिफरेंट APs गिवन है, और इन APs में एग्जैक्टली 2 टर्म्स जो हैं वो गिवन है हमें, और बाकी मिसिंग टर्म्स हमें फाइंड करनी है. सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी AP में अगर हमें कोई भी 2 टर्म्स अगर गिवन होती हैं तो हम उस AP का A और D की वैल्यूज़ निकाल कर वी कैन फाइंड द फुल AP. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस. यहाँ पर हमें ऑफ कोर्स विल यूज़ द फॉर्मूला फॉर nth टर्म हियर, और यहाँ पर हमें जो गिवन है दैट इज़ T3 हमें गिवन है कि थर्ड टर्म 26 है, और ये फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे सो n की वैल्यू हम यहाँ पर 3 डालेंगे एंड विल गेट A प्लस 2D इज़ 26. और ऐसे ही हमें यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म गिवन है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालेंगे. सो बेसिकली A इज़ दैट फर्स्ट टर्म, सो A इज इक्वल्स टू 2. सो 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, सो विल सॉल्व इट. लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो A है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड विल गेट 2D इज़ 26 माइनस 2, और 2D इज़ 24, और D इज़ 12. तो यहाँ पर हमारे पास D जो कॉमन डिफरेंस है दैट हैज़ कम एज 12. सो जो हमारी जो यहाँ पर 2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट विल बी 12 मोर और 14, एंड द नेक्स्ट टर्म इज अगेन 12 मोर दैट इज 26. चलिए जी सेकेंड केस ट्राई करते हैं. यहाँ हमारी अप्रोच सेम रहेगी. जहाँ हमें 2 टर्म्स जो हैं AP की गिवन है, उन 2 टर्म्स से हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे, और वहाँ से विल गेट वैल्यू ऑफ A एंड D. So we'll use nth term formula here, and T2 is given as 13. That means A plus 2 minus 1, that is 1 only. So A plus D is given as 13. T4 fourth term is given as 3. So A plus 3D is your 3. So 2 equations, 2 variables. Solve it by subtracting them. So A will get cancelled down, and we'll get negative 2D is 10. As negative 2D is 10, so D is minus 5. D minus 5 है, so यहाँ 13 के बाद जो टर्म होगी that will be 13 minus 5, and 13 से पहले जो टर्म होगी, ठीक है, that will be 13 plus 5. So here the first term is your 18, and the third term that is 8. Let's check the third option now. सो अगेन इट्स अ सेम केस. यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है. हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हुए अगर फोर्थ टर्म देखेंगे T4 इज़ 9.5, दैट मीन्स A प्लस 3D इज़ 9.5. T1 इज़ 5, दैट मीन्स A इज़ 5. अगेन 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स. सॉल्व इट बाय सब्ट्रैक्टिंग देम. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट A विल गेट कैंसिल डाउन, एंड विल गेट 3D इज़ 9.5 minus 5. So 3D is your 4.5, and thus D will be 1.5. So D is the common difference. So after first term
For second term we'll have to add 1.5. For third term we have to add again 1.5, and these are the missing terms. Let's check the fourth case. Same, if two terms are given, that means job is done. We can make two equations and solve it to get value of a and d. So using again nth term formula, here we have got sixth term, t6 is your 6. That means a plus 5d is 6. First term is minus 4, so a is minus 4. Two equations, two variables, subtract them, so a will get cancelled down and will get 5d is 6 minus minus of 4, so that will become 6 plus 4 or 10. So 5d is 10 and thus d is 2. D is the common difference, so from first term we can get second term by adding 2, again adding 2, and then again adding 2 and 2. So these are the missing terms of this given AP. Let's check the fifth case. So here again two terms are given, so we can form two equations. So first equation T2, second term is 38, so we can say A plus D, that's 38. And sixth term is negative 22, so we can say A plus 5D is minus 22. Two equations, two variables, subtracting them, A will get cancelled down, will get D minus 5D, that's minus 4D is 38 minus 22. So that will be 38 plus 22 or 60. Solving it, we'll get D is 60 divided by minus 4 or D is minus 15. So that means जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर वो माइनस 15 है. फर्स्ट टर्म में से जब हम 15 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 38 आ रहा है. तो जो फर्स्ट टर्म होगी वो 38 प्लस 15 दैट इज़ 53. और जो यहाँ पर थर्ड टर्म है 38 में से हम 15 माइनस करेंगे, सो दैट्स 23. अगेन विल सब्ट्रैक्ट 15, दैट्स 8. अगेन विल सब्ट्रैक्ट 15, दैट्स माइनस 7. सो दीज आर द मिसिंग टर्म्स. चलिए जी फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर एपी गिवन है और हमें फाइंड करना है कि इस एपी में 78 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है. So let's check the solution. Let's start by what's given to us. So given to us is this particular AP, and solution will start by assuming let A is the first term, which here is given as 3. D is the common difference, which is 8 minus 3 or 5, and Tn is your nth term, which here is 78. Now we'll use your nth term formula here, putting the values of A, D and Tn here. We'll get a linear equation in form of n. Solving this equation, 3 will go on LHS, so we'll get 75 is n minus 1 times 5. This 5 is getting multiplied in RHS, so it will divide 75. So n minus 1 is 15, and solving it, n will be 16. And thus in this particular AP, 78 is 16th term. And that's our answer. Let's discuss fifth question. यहाँ पर हमें AP गिवन है along with the last term और हमें फाइंड करना है कि AP में टोटल कितनी टर्म्स हैं. सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स हम अलग डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट. तो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, गिवन से. तो हमें गिवन है AP इज देयर एंड लेट्स चेक द सॉल्यूशन. सो विल अज्यूम दैट A is the first term of this AP and it's given as 7. D is the common difference, which is nothing but 13 minus 7 or 6. And let's say Tn is the nth term and that's given as 205. And of course we'll use our nth term formula here, and putting these values of A, D and Tn here, we'll get this equation in form of n. तो ये जो 7 है ये दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, so we'll get 198 is n minus 1 times 6. ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड करेगा, so we'll get n minus 1 as 33. ये नेगेटिव 1 उधर दूसरी साइड में जाकर ऐड हो जाएगा, so we'll get n as 34. And our answer is this particular AP has got total 34 terms.
Let's do the second part, which is exactly similar. So this second part approach will be exactly same. We'll start with what is given to us. So given to us is an AP, and the solution will start by assuming that A is the first term, which is given as 18. D is the common difference, which is second term minus first term. So 15 and half minus 18, and that will be negative 2 and half. So a common or casual mistake is where we miss this negative sign. And let's assume that Tn is your nth term, which is given here as negative 47. And of course we'll use our formula. Tn is a plus n minus 1d. Putting values of a, d and Tn in this formula, we'll get a linear equation in form of n. Solving it, this 18 will go on the left side, so we'll get negative 65 is n minus 1 times negative 5 by 2. Now both the side negative sign will get cancelled down. This 2 is dividing on the RHS, so it will multiply in LHS, so it will become 130. And this 5 is getting multiplied, so it will divide on the LHS. So 130 divided by 5 is 26. And solving it, n will get as 27. And thus the given AP has got total 27 terms in it. And that's our answer. लेट्स डिस्कस सिक्स क्वेश्चन. तो यहाँ पर हमें एक AP गिवन है और हमें फाइंड करना है वेदर -150 इज अ पार्ट ऑफ दिस AP और नॉट. लेट्स चेक द सॉल्यूशन. तो यहाँ पर हम गिवन पार्ट से स्टार्ट करेंगे. गिवन टू अस इज दिस AP इज देयर एंड लेट्स चेक द सॉल्यूशन. So we'll start by assuming that A is the first term of this AP, which is given as 11. D is the common difference of this AP, which is 8 minus 11 or negative 3. And let's assume that minus 150 is the nth term of this AP. So Tn, that's the nth term, we are assuming it is minus 150. So we'll try to find the value of n here, कि अगर माइनस 150 इस सीरीज का पार्ट है तो कौन सी टर्म होगी जो माइनस 150 होगी. तो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और पुटिंग द वैल्यूज Tn इज माइनस 150, A इज 11 एंड D इज माइनस 3. सो पुटिंग दिस वैल्यूज एंड सॉल्विंग इट, ये जो 11 है ये LHS में जाएगा. इट विल बिकम माइनस 161 इज n माइनस 1 टाइम्स माइनस 3. तो बोथ द साइड दिस नेगेटिव साइन विल गेट कैंसल डाउन. तो जो n माइनस 1 है दैट विल बी 161 बाई 3 और इन डेसिमल फॉर्म इट विल बी 53.67. ये नेगेटिव 1 इट विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल एड अप. सो n इज कमिंग एज 54.67. नाउ द पॉइंट टू बी नोटेड इज n इज which term we are talking about. It's either 5th term or 7th term or 54th term. So it will always be the natural number which we are talking about. So n cannot be in decimals, and thus we can say that our assumption that nth term is minus 150 is wrong, or minus 150 is not part of the given AP, and that's our answer. Let's discuss the seventh question, where given is in a particular AP जो 11th term है वो 38 है और जो 16th term है वो 73 है. और इस डाटा को यूज़ करके वी हैव टू फाइंड व्हाट इज 31st टर्म इन दिस AP. सो अगेन विल स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन टू अस, दैट इज T11 is 38 and T16 is 73. Let's check the solution. We'll start by assuming that the first term of this particular AP is A and the common difference is D. And to solve this question, we'll use again the nth term formula, that is Tn is A plus n minus 1D. So from the first given data, we can form the equation by putting n as 11. We get 11 minus 1 is 10. So A plus 10D is given as 38. And from the second data, we'll form the equation that A plus 15D is 73. So here we have got two equations, two variables. So we'll solve it by subtracting this equation. When we are subtracting it, A will get eliminated and we'll get negative 5D is negative 35. So here again the negative sign will get cancelled down.
we'll get D as 35 by 5 or D is 7. Putting D equals to 7 in our first equation and solving it, we'll get A as negative 32. So here now we have to find our 31st term. So again for that we'll use this nth term formula and putting here n as 31 and A as negative 32 and D as 7. So we'll get T31 is negative 32 plus, now 31 minus 1 is 30 and D is 7. Solving it, we'll get T31 as 178 and thus the 31st term in the given AP is 178 and that's our answer. Let's check 8th question. So यहाँ पर given है कि एक AP में जिसमें 50 terms हैं उसमें जो third term है that is 12 and the last term is 106. So that means 50th term जो है that is 106 और इसमें हमें 29th term find करनी है. So basically given is T3 is 12 and T50 is 106. Let's check the solution. So again we'll start by assuming that the first term is A and the common difference is D, and we'll use the nth term formula, that is Tn is A plus n minus 1 D. तो यहाँ पर जो हमें given है first is T3 is 12. So from here we are getting A plus 3 minus 1 that is 2, D is 12. So from the first information we are getting the equation A plus 2D is 12. And same way from the second information, so here this when we put n as 50, so n minus 1 will become 49. So from this second information we are getting A plus 49D is 106. So we have two equations in two variables. So we'll solve it by subtracting these equations. So when we are subtracting, A will get cancelled down. So we'll get 2 minus 49, that is minus 47D is minus 94. So both the side this negative sign will get cancelled down. So we are getting D is 94 upon 47 or D is 2. Putting D as 2 in our first equation, we'll get A plus 4 is 12 or A is 8. Now here we have to find the 29th term. So again we'll use the nth term formula and here we have to find value of Tn where A is 8 and n is your 29th term, so n is 29 and D is 2. So putting this value we'll get T29 is 8 plus 29 minus 1 that is 28 times of 2. Simplifying it we'll get T29, that's 29th term is 64. So we'll end up with our statement, that is in this given AP 29th term is 64 and that's our answer. Let's check the 9th question. Here it's given that एक particular AP में जो third term है that is 4 and 9th term is negative 8 and इसी AP में हमें find करना है कि कौन सी term जो है वो 0 होगी. So let's check the solution. तो यहाँ पर हमें जो given है that is T3 is 4 and T9 that's 9th term is negative 8 and let's check the solution. So here we'll start by assuming जो हमारी first term है that is A and जो common difference है AP में that is D and the formula which we'll use is that Tn is A plus n minus 1 D. तो किसी भी क्वेश्चन में अगर AP की दो टर्म्स हमें गिवन है then we can find that AP and to find that AP means we can get the first term and the common difference D and we'll approach same way here. So T3 is 4, that means A plus 2D is 4 and T9 that's negative 8, so that means A plus 8D is negative 8. So we have got two equations in two variables, so we can solve it to get value of A and T. So let's subtract these equations first. So when we are subtracting we are getting negative 6D is 12 or D is negative 2 and putting this value of D in the first equation we'll get value of A as 8.
Now that we have got A and D, we can find any term in this AP. So यहाँ पर हमें let's assume that the term nth term in this AP is 0. nth term 0 है तो यहाँ पर वापस हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे. nth term का फॉर्मूला is this. Now here this Tn that is 0, A is 8 and D is -2, and we have to find the value of n. So let's put these values here. We'll get this equation. इस 8 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं. That will become -8 is n-1 times of -2. तो यहाँ पर both the side negative sign that will get cancelled down. ये जो 2 है this will divide 8, so we'll get 4 is equals to n-1, and this -1 will go on the other side, so we'll get n as 5. That means इस AP में जो 5th term है that will be 0. And that's our answer. Let's check 10th question. तो यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, और इस AP में we have to find the common difference. So here given to us is T17, that is 17th term minus 10th term is 7. So let's check the solution. Let's start by assuming कि इस particular AP में जो first term है that is A and the common difference which we have to find is D. Again we'll use the formula for nth term that is A plus n-1D. और यहाँ पर ये जो हमें given equation है, इस equation में we'll put the value of 17th term that will be A plus 16D, और ये जो 10th term है that will be A plus 9D. ये ब्रैकेट ओपन करके when we'll solve it, both the side A will get, on the left side A will get cancelled down, and we'll be left with 16D minus 9D, that is 7D is equals to 7, and thus D is 7 by 7 or 1, and thus in this particular AP the common difference is 1. Let's check 11th question. Here given to us is an AP, और इस AP में हमें वो टर्म फाइंड करनी है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है. तो यहाँ सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 54th टर्म फाइंड करेंगे and then we'll find that term which is 132 more. So let's start with what is given to us. Given to us is this AP, and in solution we'll start by assuming that A is the first term which is given as 3, D is the common difference which is 15 minus 3 or 12, and T54 is your 54th term. So here we'll use the formula of nth term, that is Tn is A plus n-1D. Here putting the values of n as 54, A is 3 and D is 12. So simplifying it, we'll get our 54th term as 639. Now let's assume that nth term is 132 more than 54th term. So that means Tn is T54 plus 132, but T54 is 639. So Tn is 639 plus 132, that is 771. Now again using this nth term formula, so we'll get your A plus n minus 1D, that is nth term, and that we have calculated as 771. Putting the values here, A is 3 and D is 12. Now solving it, this 3 will go on the other side, so n minus 1 times 12 is 768. Now this 12 is multiplying in LHS, so it will divide in RHS, and this -1 will go on the other side, we'll get n as 65, and that means that the 65th term is 132 more than 54th term, and that's our answer. Let's check 12th क्वेश्चन. हमारे पास यहाँ पर 2 डिफरेंट APs गिवन है, बट उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है. दैट मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वो डिफर कर सकती है, बट कॉमन डिफरेंस D दैट इज सेम. उनकी जो 100th टर्म है उनके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज 100. यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड कि उनकी जो 1000th टर्म है उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा. तो हियर विल सॉल्व इट 2 वेज. वन इज फॉर्मल अप्रोच जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, एंड सेकेंड विल बी लॉजिकल अप्रोच कि अगर यही क्वेश्चन MCQ में आता है तो हम इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं.
तो लेट्स चेक द फॉर्मल अप्रोच फर्स्ट। तो यहाँ पर जो है विल स्टार्ट बाय अज्यूमिंग दैट फॉर दिस एपीज जो फर्स्ट टर्म है ना, टू डिफरेंट एपीज हैं तो उनकी फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगी। सो लेट्स अज्यूम देयर फर्स्ट टर्म इज ए एंड कैपिटल ए, दैट्स डिफरेंट टर्म्स आर देयर एंड देयर कॉमन डिफरेंस विच इज गिवन एज सेम इज डी। तो यहाँ पर जो nth टर्म है, ठीक है, उसको भी हम अलग अलग ले रहे हैं, स्मॉल टी एन एंड कैपिटल टी एन से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज nth टर्म इज a प्लस n माइनस 1 d। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, दैट मीन्स t100 माइनस कैपिटल T100, दिस इज गिवन एज 100। अब ये जो स्मॉल t100 है, यहाँ पर हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, सो दिस विल बी a प्लस 99d and this capital T100 will be capital A plus 99d। and now when you will open the bracket and solve it, 99d जो है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा हमारा। so what will be left with this small a minus capital A is 100। that means जो उनके फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है that is also 100। अब यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे हमें 1000th टर्म का डिफरेंस चाहिए, सो विल से t1000 माइनस t1000 है ना, कैपिटल T1000, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। और यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, सो दिस विल बी a प्लस स्मॉल a प्लस 999d माइनस कैपिटल A प्लस 999d। अगेन व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई इट, सो 999d ऑन बोथ साइड विल गेट कैंसल्ड and this difference is nothing but a minus a, and this we have already found is nothing but 100, and thus the difference between the 1000th term that will also be 100, and that's our answer। और इसी को अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो लॉजिकली बेटा ये जो टू एपीज हैं, these are represented let's say by two person जो कि एक रेस में अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज देयर ए एंड कैपिटल ए, दैट्स द फर्स्ट टर्म इज डिफरेंट, बट उनकी स्पीड सेम है। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम है दैट मीन्स देयर स्पीड इज सेम। तो स्पीड सेम होने से क्या होगा, जो डिस्टेंस उनका जो है स्टार्टिंग में होगा वही डिस्टेंस जो है वो 100 स्टेप्स के बाद होगा, और वही उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1000 स्टेप्स के बाद होगा। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस 100 टर्म्स पे 100th टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 100। सो इनिशियल डिस्टेंस इज आल्सो 100, दैट इज a माइनस कैपिटल A इज 100, एंड 1000 स्टेप्स के बाद भी जो उनके बीच में डिफरेंस होगा दैट विल बी 100। सो दैट्स आवर आंसर। आई होप यू एंजॉयड द सॉल्यूशन। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय। लेट्स चेक 13th क्वेश्चन, एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेयर इट्स आस्किंग कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। लेट्स चेक द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, सो वी नो दैट 7 टाइम्स 15 इज 105। सो 105 इज आवर फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, दैट इज 105 प्लस 7 और 112। तो इसी टाइप में हमारे पास जो सीरीज बनेगी, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7 आर दीज। अब इस सीरीज में हमें वो लास्ट नंबर निकालना है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का नंबर है। तो पहले तो हमारे पास ये जो है ये एक एपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी 105 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। अब इस सीरीज का लास्ट नंबर निकालने के लिए तो पहले हम 999 लेते हैं, द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, और उसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 999 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा। तो ये 5 रिमाइंडर का मतलब है कि ये सारी चीज़ें 7 से डिवाइड हो रही थी और 5 हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 है इसको अगर हम यहाँ 999 से निकाल देते हैं तो दैट मीन्स 994 इज़ द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा। तो हमारी ये जो एपी है, इस एपी में जो लास्ट नंबर है दैट विल बी 994। अब यहाँ पर हम nth टर्म का अपना फॉर्मूला लगाएंगे, tn इज a प्लस n माइनस 1d, और यहाँ पर nth टर्म जो है दैट इज 994, a इज 105 एंड d इज 7, और यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ n जो है वो निकालनी है। तो सबसे पहले RHS में जो 105 है इसको LHS में ले जाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं, विल गेट आवर इक्वेशन इन दिस फॉर्म।
ये जो 7 है ये RHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो LHS में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट n-1 as 127 and n will be 128. That means there are 128 3-digit numbers which are divisible by 7, and that's our answer. Let's check 14th question. This question we have to find how many numbers between 10 and 250 are multiples of 4. कितने ऐसे नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से completely divisible हैं. Let's check the solution. तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है जो 10 से बड़ा है और 4 के टेबल में आता है, दैट इज नंबर 12 इज देयर. 12 के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर होगा दैट विल बी 16 एंड देन इट विल बी 20 एंड सो ऑन एंड विल गेट दिस सीरीज. तो ये हमारे पास जो सीरीज है ये AP में है, जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 12 है और कॉमन डिफरेंस इज 4. व्हाट विल बी द लास्ट टर्म इन दिस सीरीज? दैट लास्ट टर्म शुड बी लेस देन 250. So let's do is let's divide 250 by 4. तो 250 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 2. ये जो 2 है ये हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है. अगर ये 2 नहीं होता तो जो नंबर है वो 4 से completely divisible होता. So the biggest number less than 250 and which lies in a table of 4, that will be 2 less than 250 or 248. तो हमारे पास ये जो सीरीज है इस सीरीज में जो लास्ट नंबर होगा दैट विल बी 248. सो ये जो नंबर है दिस इज nth नंबर. तो यहाँ पर हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे. nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n-1d. यहाँ पर n जो है दैट्स हाउ मेनी टोटल नंबर्स आर देयर इन दिस सीरीज एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज हियर. सो पुटिंग द वैल्यू हियर, Tn is your 248, a is 12 and d is 4. So solving it, first let's take 12 on the other side. So we'll get 248 minus 12, that is 236 is n-1 times 4. ये जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड करेगा. तो n-1 is 236 divided by 4, that is 59. This -1 let's take it on the other side, so we'll get n as 60. So sometimes we leave solution here only. हाँ जी हमारा n आ गया and that's our answer. Please है ना, you have to write the end statement, otherwise you will lose half a mark. And end statement will be thus there are 60 multiples of 4 between 10 and 250. Let's discuss this 15th question. Where given to us are two APs are there, and in these two APs nth term is equal. So we have to find the value of n. Let's check the solution. So we'll start with what is given to us. Given to us are two APs are there, and let's check the solution. For first AP, the first term, that's A, is 63, and the common difference D, that is 2. And here the nth term, the formula for nth term is Tn is A plus n-1d. So here we'll put A as 63 and D as 2. So nth term can be given by 63 plus n-1 times of 2. Opening the bracket here, so it will be 63 plus 2n minus 2. Simplifying it, so nth term for the first AP is given by 61 plus 2n. Same way for the second EP, the first term is nothing but 3 and the common difference is 10 minus 3 or 7. And nth term, putting A as 3 and D as 7, will get nth term as this. Opening the bracket, so nth term is 3 plus 7n minus 7. Simplifying it, nth term is minus 4 plus 7n. Now here the nth term is equal in both the APs. So basically these values, that is 61 plus 2n, will be equal to minus 4 plus 7n. Now solving it, taking the term with n on one side, so we'll get 61 plus 4 is 7n minus 2n, or 65 is 5n and n is 13, and thus
the 13th term in both the APs will be equal to each other, and that's our answer. Let's discuss 16th question. Here given is an AP whose third term is 16. That is given to us is T3 is 16, and the 7th term exceeds the 5th term by 12. That is T7 minus T5 is given as 12. So here we have two equations, and when we'll put the value of T3 and T7 in terms of A and D, we'll get two equations in form of A and D, and we'll solve them to get our answer. So here T3 is given as 16. So from here we'll get the equation that T3 is A plus 3 minus 1, that is A plus 2D. That's given as 16. So that's our first equation in terms of A and D. And from this T7 minus T5 equals to 12. From here we'll get our second equation. T7 is A plus 6D and T5 is A plus 4D. And their difference is given as 12. Here when we open the bracket, A will get cancelled. We'll get 2D is 12 or D is 6. So here we have got our value of D directly. Otherwise normally we get two equations, two variables, and we'll solve them simultaneously to get A and D. So here if D is 6, we'll put this value of D here and solve it to get A as 4. So we have got our AP with first term as 4, common difference as 6, and thus the AP will be 4, 10, 16, 22 and so on, and that's our answer. Let's check this 17th question. It's an interesting question where given to us is an AP, and in this AP we have to find 20th term, but this time we have to find this 20th term from the last. So let's check the solution. Given to us is this AP, and the common difference of this AP is 5. So if the last term is 253, then the second last term, that will be 5 less, that is 248. Third last term, that will be 5 less more, so that is 243. So what about if we'll write the same AP but this time in reverse order, that is starting with 253, then 248, 243 and so on. Now this series return in reverse is also an AP, but this time the common difference is not 5, but it's a reducing AP, so common difference is minus 5. And for this AP, your first term is 253, common difference is minus 5, and we have to find the nth term. That nth term is 20th term is what we have to find. And of course we'll use our formula, that is Tn is A plus n minus 1 D, where n is 20. So T20 is A plus, A is your 253, n is 20 and D is minus 5. Solving it, we'll get T20 as 253 minus 95 or 158. So this 20th term of this AP is what is 20th term from the last of our original AP, and thus the 20th term from the last is 158, and that's our answer. Let's check question number 18. Here given to us is जो fourth term और eighth term है उनका जो sum है that is 24, that is T4 plus T8 is 24, and also given to us is sum of 6th and 10th term that is 44. तो यहाँ पर जो second equation बनेगी that is T6 plus T10 is 44. Let's check the solution. We'll use the nth term formula, that is Tn is A plus n minus 1D. तो यहाँ पर अगर हम n को 4 डालेंगे तो n minus 1 will become 3. So T4 is A plus 3D, T6 A plus 5D, T8 A plus 7D and T10th will be A plus 9D. तो ये हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट. सो T4 प्लस T8 इज 24. तो यहाँ पर T4 और T8 इनकी हम वैल्यूज डालते हैं
और LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, सो a plus a will be 2a and 3d plus 7d is 10d. This is our first equation from this first given condition. Same way, second condition, that is t6 plus t10 is 44. Putting t6 as a plus 5d and t8 as a plus 7d. So again इसको simplify करेंगे, we'll get 2a plus 14d is 44. And solving it, we have got two variables, two equations. So let's subtract these equations. So both the LHS, this 2a will get cancelled down. 10d minus 14d, that will be your minus 4d. And RHS will be 24 minus 44, that's minus 20. Simplifying it, minus sign will get cancelled. D is 20 divided by 4, or D is 5. That's common difference is 5. Putting D as 5 in your first equation, and when we'll solve it, we'll get A as minus 13. Now here we have to find the first three terms of this AP, and of course first term is minus 13, and second term, that will be minus 13 plus 5 or minus 8, and third term, that will be minus 8 plus 5, that's minus 3. And thus the first three terms of this AP are minus 13, minus 8 and minus 3, and that's our answer. Let's check the 19th question. दिस इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चन जहाँ पर जो है स्टूडेंट्स पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं और लास्ट में जाकर दे मेक वन कैजुअल मिस्टेक एंड यूजुअली लूज इज हाफ अ मार्क. सो लेट्स सी इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व इट और यू आर ऑल्सो लूजिंग हाफ अ मार्क. सो यहाँ पर गिवन है हमें मिस्टर राव, ही स्टार्टेड वर्किंग इन 95 एट सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000 एंड एवरी ईयर ही इज़ गेटिंग एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज़ 200. So he is getting salary of rupees 5200 in 96, 97 it will be 5400 and so on. And यहाँ पर हमें find करना है कि in which year his income will be rupees 7000. So of course we'll start with the given part. तो यहाँ पर हमें given है कि he started working in 95 with rupees 5000 and every year he is getting increment of 200 rupees. Now let's check the solution. So this we have established that his salary will be 5000 in 95, then next year it will be 5200, then 5400 and so on. और यहाँ पर हम assume कर रहे हैं कि यहाँ पर जो nth term है that is 7000 and we'll find the value of n. तो ये जो nth term है, so we are assuming that in after nth year or in nth year his salary is becoming rupees 7000. तो इस AP में जो आपकी फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5000 और जो कॉमन डिफरेंस है D दैट इज़ 200 एंड TN द nth टर्म इन दिस सीरीज इज 7000, दैट्स द लास्ट टर्म इज 7000. टू सॉल्व इट यू विल यूज द फॉर्मूला TN इज A plus n minus 1D. Now let's put these values here in this equation. Now solving it is very easy. Let's shift this 5000 to LHS first. So it will be 2000 is n minus 1 times 200. So here either you can just cut these zeros here, or best is this 200 is getting multiplied in RHS. In LHS when it goes it will divide 2000. Now solving it is easier. So zeros are getting cancelled and 2 tens is your 20. So here we are getting n minus 1 is 10. Or solving it n will be 11. Now students lose marks usually when they leave it here only, that n is 11 and that's your answer. Of course we have to check what is asked in the question. It says in which year did his income reach. So we have to tell the year, and the end statement, that is thus after 11 years or in year 2006 his salary will be rupees 7000. Now again this statement is wrong. Pause the video and work out why this statement is wrong. Now let's check why this statement is wrong. Here n is 11 is 11th term we are talking about, not after 11 years. 1995 he is earning rupees 5000, that's your first term, and
So after 1995 we are talking about 11th term, means we are talking after 10 years. Again I'll repeat, 1995 is your starting term. So total 11 terms are there. So after 1995 there will be 10 more years for him to reach rupees 7,000. So it's not year 2006, but it will be year 2005. That will be our answer. Challenge. Let's check this 20th question. Here it says Ramkali saved rupees 5 in the first week and then increased her weekly saving by rupees 1.75. तो पहले हफ्ते उसने 5 रुपये सेव किए एंड नेक्स्ट वीक उसने 6.75 रुपीज़ सेव किए. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है उसमें उसने 1.75 मोर, दैट इज़ 8.5 रुपीज़ सेव किए. एंड लाइक दैट शी केप्ट ऑन सेविंग. और nth वीक में उसकी जो वीकली सेविंग थी, जो उस हफ्ते उसने सेव किया, दैट वाज 20.75 रुपीज़. तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है कि वो कौन सा हफ्ता था जब उसने 20.75 रुपीज़ सेव किए होंगे. तो यहाँ पर जो हमें गिवन है दैट इज़ कि ये जो सेविंग है रामकली की वीकली सेविंग, दैट इज़ रुपीज़ 5 प्लस 1.75, 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1.75 एंड लाइक दैट. और जो वीकली सेविंग है वो 5, 6.75, 8.5 एंड सो ऑन. और यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो सीरीज़ बन रही है इसमें 20.75 वो कौन से नंबर पे लाई करेगा. तो ये जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा फिक्स्ड है, तो ये AP है. और AP में ये जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 5. और यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईच सेट ऑफ 2 टर्म्स, दैट इज़ 1.75. और यहाँ पर हमें nth टर्म गिवन है कि nth टर्म हमारी 20.75 है. तो यहाँ पर हमें n निकालने के लिए विल यूज़ nth टर्म फार्मूला, दैट इज़ nth टर्म इज़ a प्लस n माइनस 1t. और यहाँ पर हमें n की वैल्यू जो है दैट वी हैव टू फाइंड. तो यहाँ पर हम tn, a और d की वैल्यू विल पुट और इसको जो है हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो 5 है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं, तो दैट दिस लेफ्ट टर्म विल बिकम 15.75. नाउ ये जो 1.75 है इसको विल टेक इट ऑन द अदर साइड. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड करेगा. ठीक है, यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे दीज आर लाइक डेसिमल्स है ना. डेसिमल्स के बाद जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सेम है, तो वी कैन एलिमिनेट डेसिमल हियर. सो दिस विल बिकम 1575 अपॉन 175. इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कैंसिल करें, फर्दर कैंसिल करें, तो सिंप्लीफाई करने पर यू विल फाइंड कि हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 9. सो यहाँ पर n की वैल्यू, दिस नेगेटिव 1 विल गो ऑन द अदर साइड एंड विल गेट n एज 10. एंड as we are doing in all the questions, the end statement is equally important, that is her weekly saving became 20.75 in 10th week, and that's our answer. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.